बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो उसमें जो थ्योरेटिकल टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। यूनिट का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो आज के हम इस लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या है और फ्लूइड के टाइप्स क्या है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम है फ्लूइड। पेपर में इस पर एक सारा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म: फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स వచ్చి हाइड्रोडायनामिक्स एंड एरोडायनामिक। तो चलो स्टार्ट करते हुए कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? देखिए, अ सब्सटेंस दैट फ्लोज इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। कोई भी चीज़ जब बह जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। देखिए बच्चे, ऑल लिक्विड इन गैसेस सब्सटेंस आर कंसिडर्ड टू बी फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, वाटर, oil and other are very important in our day-to-day life, as they are used for various applications. For instance, water is called for generation of electricity and hydroelectric power plant and thermal power plants. So water is also used as the कूलेंट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि पानी की वजह जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा पानी की मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट। ऑयल इज़ यूज फॉर द लुब्रिकेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल। एग्जाम्पल आर लिक्विड, गैसेज एंड वाटर प्लाज्मा। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ये हमारे पास एक ब्रांच है। सो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। सो फ्लूइड मैकेनिक्स डील विथ थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्लूइड: स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? द फ्लूइड विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट is called a static fluid, and its study is called as a fluid statics. Fluid dynamic, देखिए the fluid which is in state of motion is called what? A moving fluid या fluid इसको हम क्या कहते हैं? fluid dynamics. तो इसी तरह the branch of science which deal with the effect of all pressure including the external pressure on the moving fluid is called as fluid dynamics. देखो जी, fluid dynamics is further classified into two types. एक को हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स और दूसरे हमारे पास क्या होता है? एरोडायनामिक। So the hydrodynamics, the branch of fluid dynamics which deal with the property and behavior of liquid in motion is called hydrodynamic. For example, water, oil and milk etc. दूसरा है aerodynamics. So that branch of fluid dynamics which deal with the property and behavior of gas in motion is called aerodynamic. For example, the lifting of airplane is explained by aerodynamic. Fluid dynamics is relatively complicated. It can be simplified by making a few assumptions. The process is further simplified by the use of two conservation laws: the conservation of mass and the conservation of energy. So the law of conservation of mass gives the equation of continuity, and the conservation of energy gives us what Bernoulli's equations. तो ये हमारे पास फ्लूइड और उसके टाइप्स थे।